بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कसम है इंजीर और जैतून की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है, फिर हमने इसको पस्तरीन हालत की तरफ पलटा दिया है। अलावा इन लोगों के जो ईमान लाए और इन्होंने नेक आमाल अंजाम दिए तो इनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। फिर तुम को रोज़े जज़ा के बारे में कौन झुटला सकता है? क्या खुदा सबसे बड़ा हाकिम और फैसला करने वाला नहीं है? सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। A warm welcome to all our guests. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए हैं, टाइम निकाला है, and obviously everybody here जो सुनने आए हैं इनको we really do appreciate it. I think ये initiatives जो जमात ले रही है, it is just to make sure that हम as a community connect करें, which is the most important thing. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी community में जो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपने personal and professional careers में किया है, हम उससे कुछ सीख सकें। So, इसी तरह से हमारी community grow होगी, and that's the whole objective of such seminars. Especially geared towards the youth. I think that's one area जो हर community के लिए is a big asset. The quality of the youth. Alhamdulillah, we are very lucky to have an amazing quality of youth in our community. But the important thing is कि हम सब मिल के बैठें, discuss करें, इन leaders से सीखें. I think it's going to be beneficial for all. So thank you everybody, and let's have a good session. अच्छा, इसको बहुत ही ईजी हम करेंगे, ये हमारा कोई फॉर्मल वो नहीं है, आराम से हम एक ड्राइंग रूम चैट बैठे हैं, एंड द होल ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ गुड एनर्जेटिक सेशन वेयर वी स्पीक फ्रॉम द हार्ट। यू नो वो प्री हमारे वो आंसर्स हैं, आई एम श्योर तुम लोग बोर्ड मीटिंग्स में करते होगे यार ये बोलना है नहीं बोलना है, लेकिन आज वी ऑल टेयर आवर पेपर्स अवे एंड स्पीक फ्रॉम द हार्ट। सो इट्स गोना बी अ गुड वन इंशाल्लाह। ग्रेट है, नो पेपर्स देयर। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अंकल, थैंक यू सो मच। आई विल स्टार्ट विद यू द फर्स्ट क्वेश्चन।
So, Uncle, look, the objective is to discuss about our community, the drive we've had as a community always in running businesses. You know, हमारी एक heritage है, कि हमारी जो खोजा Gujarati speaking community है, back in India before partition and after partition as well, we've always been business community people. आज इंडिया में भी आप देखें जो टॉप बिजनेसेस हैं, दे आर बीइंग रन बाय मेनी ऑफ द गुजराती फैमिलीज एंड ऑब्वियसली हमारी भी मदर टंग गुजराती है एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग हेरिटेज इन इट. In the last few years or few decades, obviously there's been a change in a mindset, economy को देखते हुए, employment की security को देखते हुए. So that is obviously a very important part, जो economic security है. But just wanted to start with you, your thoughts on do you think are the key advantages of starting or developing your own business? Can you please shed some light on this? Thank you very much. I'm very honored to be asked to. I just get this a bit closer to you. Very honored to be asked to be here today. Normally, I'm always hiding behind the scenes, and rarely do I accept. It's time you come on the front now. And to be placed in this position to, I took the liberty of doing some research and making some notes, so to allow me to also refer to. Then you from the hard notes, so you can do it. Masla nahi. From my heart, it has to go to what I would do. Yes, it's basically, in order to get into the business, it's for a Khoja family, for a Khoja youth, from being a warrior tribe to be now running businesses and contributing. So that it's a continuation of a legacy, and this continuity basically gives you a strong sense of perspective of what you would like to do. Also, there are, like shared values and culture that you have seen our other members, mashallah, succeeding in the business. So it's an inspiration for the youth to also take some notes from that, Plus, starting your own business gives you the advantage of being your own boss, your own flexibility, to manage your affairs. There are a lot of other points, but I would like to now hand it over to others to also To share. Hussain as well. Yeah, thank you so much. नहीं, ये आपने बड़ा interesting बोला, being your own boss. I think this is a very key one to many people जिनको attract करता है business. तो हमें we'll come back to this. Coming on to you, Hussain. So basically, advise us. Why would you think कि जो हमारे youth है, why should they be encouraged into coming into business as a viable career option? ठीक है, because obviously Ali uncle spoke about the reasons कि हमारे जो legacy है उसको क्यों important है continue करना. But generally, given the economic hardships, the challenges जो हम लोग normally economy में face करते हैं, जो risks associated हैं, why would you promote young people to think about wanting to come into businesses given the risk appetite? Thank you, Mohsin Bhai. Now is for my thought process, this is the best time in the history of our nation for anyone to be an entrepreneur. There are two things that you look at when you see an economy and you see the potential. There are two things. Number one is job creation and number two is productivity. Our economy in respect to productivity is drastically offering many opportunities for entrepreneurship. And it can be anywhere. I mean, you look at Daraz. I was just, yesterday I was with the CEO of Daraz and Food Panda, and they were telling me that the female entrepreneurs are just growing exponentially. Let it be the home kitchens, or let it be, in Daraz, they're creating solutions and they're creating their own marketplaces and they're creating their own stores where they can operate from. So this is the best time to be an entrepreneur because through technology, many barriers of entries have been shattered. And, I'm very proud to say that, I'm a firm believer that the Khoja community is an equal employer or equal opportunity based community.
So, and it goes in our faith also that the females of our community, let it be in our religion also, they've led, many things. And this is the best time today. So that's one aspect of it. The second aspect is that, there are a lot of hardships. There's no question about it. And there are a lot of difficulties. That's a given. But there are opportunities. You see, entrepreneurship is not about making money. Entrepreneurship is about solving problems and finding solutions. If your solution is good, money will come chase you. And putting everything aside, as an entrepreneur, one of the best things is, and as a community, being a Khoja community, that I always say, देखिए कंपनीज तो चलते रहेगी, काम चलते रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जरिया बनाया है फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर जॉब क्रिएशन. तो अल्लाह ताला ने आप सबको जरिया बनाया है टू बी इन द खोजा कम्युनिटी विच इज़ नोन फॉर दिस, एंड दैट्स अ बिग ब्लेसिंग. ये एक अमानत है, एंड ये बहुत बड़ी अमानत है जो हमारे खून में है. And to create jobs, to go to business today, to lead your business, I would say today's environment is jihad. You're going for jihad every day, and if you die, subhanallah. So the point is that it's a beautiful opportunity. Your risks are there, no doubt, but the opportunities are tremendous. So you have to be acknowledged that आप सबके पास एक बहुत बड़ी अमानत है. Be a Khoja. It's a big opportunity, and it's a big blessing. And the blessing is that it's in your blood, it's in your genes, it's in your family to be entrepreneurs. And when you create jobs, that's the blessing. That's enough. That's a big blessing from Allah. That's a great point, Hussain. Sorry. If I may add, the Khoja Amanat should also remain that Kona Jana. नहीं, I think Hussain, that's a very very amazing point, and I think ये बहुत ही key point है about entrepreneurship. I think businesses का हम immediate link करते हैं to money, कि भाई business करो तो पैसा आएगा, and that exactly is a very I think it's a wrong way to look about it as well. आप जो तुमने बोला है ना कि solutions ढूंढो, problems identify करो, market में industry में हर किस्म के problems हैं, आप वो problem identify करें, उसकी नीड को देखें और उसकी नीड को सोल्यूशन करें और एक्सेलेंस की तरफ ड्राइव करें, ऑटोमेटिकली द मनी विल स्टार्ट फॉलोइंग, बिकॉज आपका आइडिया नॉवल है. आई थिंक बहुत मर्तबा हम घबराते हैं, इस तरह है, या हमारी सोच हो जाती है कि जी हमने पैसा बनाना है और हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हमने पैसा बनाना है. इट इज एक्चुअली नॉट अबाउट पैसा बनाना. ठीक है, अगर हम एक्सेलेंस के लिए जा रहे हैं, अगर हम जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह जा रहे हैं, तो पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, बिकॉज पैसा एक्सेलेंस को फॉलो करता है. वरना अगर हम पैसों को फॉलो करते रहेंगे तो हमारे आगे पीछे भागता रहेगा और हमारी रेस दुनिया की खत्म हो जाएगी. सो आई थिंक दैट्स अ रियली वैलिड पॉइंट टू सेंड. अमेजिंग. आमिर, आई हैव गॉट 2-3 वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस फॉर यू. मुश्किल वाले हैं तो उर्दू में जवाब देना भाई, ताकि मेरी भी समझ में आए, बिकॉज मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. सो यार ये मुझे बताओ, there were 2 questions I wanted to ask you, but I think मैं पहले इजी वाला पूछता हूँ. तुम्हारा पहला ओवर है, आराम से बैटिंग कर. सो यार मुझे बताओ, द चैलेंज इज, जो शौक है इस वक्त, जो यूथ जब सोचती है बिजनेस के बारे में इस वक्त, उसका पहला दिमाग या प्रोबेबली 99% व्यू पॉइंट जाता है आईटी. लाइक पिछले 10-20 सालों में, 25 सालों में, इट्स बीन ऑल अबाउट आईटी इन डिफरेंट वेज. आईटी की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एंड नाउ वी आर सीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो नेचुरली द सोल्यूशन, फिर वो एप्स एंड द वे द वर्ल्ड इज कनेक्टेड. तो ये बहुत ही नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कि यार आईटी में कुछ करो, आईटी में ऐप बना लो, ऐप बना के भेज दो, वो इलॉन मस्क पता नहीं कितने बिलियन बना रहा है, फलाना, यू नो दैट. ठीक है, एंड यस, ये बिल्कुल वायबल है, लोग कर भी चुके हैं, सक्सेस स्टोरीज हमारी कम्युनिटी में मौजूद हैं. तो बट मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में अगर कोई भी आपका एक फैमिली बिजनेस है, स्मॉल टू मीडियम लेवल, और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, जो इट्स नॉट आईटी बेस्ड, इट्स अ ट्रेडिशनल मॉडल, व्हाटएवर, हम गारमेंट्स बनाते हैं, एक ट्रेडिशनल मॉडल है, 50 साल से 60 साल 100 साल से दुनिया में गारमेंट्स बिक रहे हैं. सो आप मुझे बताओ कि ये सिर्फ अब आईटी बेस्ड ही रह गया यूथ? इज दिस द माइंडसेट? या ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर जिनके पास स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस हैं, देयर आर अपॉर्चुनिटीज के वहां पर भी ग्रोथ हो? यार मोहसिन, मेरा ख्याल ये है कि देयर इज अ ट्रेंड. एक टाइम आता है, उस वक्त एक वेव चलती है, जब वो वेव फैशन है, तो वो जब वेव चलती है तो नेचुरल एक टेंडेंसी होती है
for everybody to get attracted to that. अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो आफ्टर माय जॉब दैट आई डिड एट एमेक्स फॉर 2 years in banking, 1 year at corporate banking and 1 year treasury and funds management. So before I started that job, मेरे फादर का ख्याल भी ये था कि यार हमारा बिजनेस मशीनरी का है, तो ऐसा करो कि व्हाई डोंट यू गो टू अ गारमेंट फैक्ट्री और उसमें चले जाओ और जाके जो है वो गेट सम एक्सपीरियंस, ग्राउंड पे सीखो कि गारमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होता है क्या, तो यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कस्टमर बेस। तो तुमने मुझे कॉल इसीलिए की थी कि हम वहां पर उसके लिए हाँ हाँ, ये उसी की कॉल। तो बेसिकली बात ये कि मैं अब नया नया यूनी से निकला था एंड यू नो आफ्टर स्टडीइंग फ्रॉम आईबीए, जहाँ हर कोई जो है वो या फाइनेंस की तरफ जाना चाहता था या मार्केटिंग की तरफ, या आपको पीएनजी में काम करना है या आपको किसी बैंक में जाना है, द नेचुरल चॉइस, और यू वांट टू गो एंड जॉइन सम स्टॉक एक्सचेंज फर्म। ये 3 आपके हाई फ्लाइंग जॉब्स होती हैं। तो जाहिर सी बात है व्हेन यू आर यंग यू गेट वो। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था। द रीजन आई वेंट इनटू अ बैंक वाज I want to sit on the other side of the table. So I knew कि एक फैमिली बिजनेस है, sooner or later तो आना ही पड़ेगा इसमें, out of no choice. तो मैं चाहता था कि मैं उस तरफ बैठ के देखूं कि कल जब मैं इस पोजीशन में आऊँगा कि मुझे अपनी टीम को मैनेज करना होगा, तो मैं दूसरी साइड पे बैठ के देखूं कि हाउ इट फील्स, एक बात। दूसरा ये था कि आई वॉन्टेड टू गेन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। जब मेरा शुरू में ही इंटरव्यू हुआ था तो रेहान शेख वॉज द कंट्री कॉर्पोरेट हेड, तो उसने जब मेरा इंटरव्यू ले लिया, मेरे 7 इंटरव्यू हुए थे फॉर द जॉब, जब उसने मेरा फाइनल इंटरव्यू ले लिया। विद द फैमिली बिजनेस देयर आपने 7 इंटरव्यू दिए थे? 7 इंटरव्यू दिए थे, एचआर को, क्रेडिट को, इसको उसको, एंड 7वें इंटरव्यू तक मैं थक चुका था। मैंने कहा बस अब देना है तो दो, नहीं तो जाने दो। सो जब रेहान ने मेरा फाइनल इंटरव्यू लिया तो रेहान ने मुझे कहा कि तुम 1 साल बाद जाओगे कि 2 साल बाद? ओके, शॉर्ट टर्म वो करना है। उसको पता था कि ये फैमिली बिजनेस है, सूनर और लेटर ये। अब बात ये है कि वन हैज टू मेंटेन वंस इंटेग्रिटी। अब उसने मुझे ट्रिक क्वेश्चन पूछ तो लिया था, अब ना मैं झूठ बोलना चाहता था ना मैं सच बोल सकता था। तो मैं उसको कहा सर ये तो टाइम ही बताएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज अ प्रोसेस। आप अपना एक ट्रेंड चलती है, आपको अपना एक्सपीरियंस देखना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि जो ये आईटी का आजकल बज़ है ना, मेरा फर्स्ट बिजनेस भी आईटी था। आई वॉज द फर्स्ट ई बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर इन पाकिस्तान। We worked with, my clientele was British Petroleum. I was working with Merck Sharp and Dome. I was their regional solution provider. I did the e-governance model for the British Parliament. And we worked with Yahoo. And Alhamdulillah, in those 2 years that I was doing that, we did a lot of things. This is all the glory part that, I mean, gets shared. But the thing was कि जब मैंने स्टार्ट किया तो एज आई सेड के एक यपी थे, तो 3 पार्टनर्स थे हम, 2 अदर गाइज ऑल्सो। एक मेरा बचपन का दोस्त था, वो IBM में जॉब करता था, ही वॉज एन AS400 स्पेशलिस्ट। IT का मुझे सर पैर नहीं आता था, धंधा मुझे आता था। तो उसने कहा अच्छा ठीक है एक ये आ जाए। सेकेंड उसको, तो आई आस्क्ड खुरम के भाई यू जॉइन, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव वॉज टू डेवलप ERP सॉल्यूशंस। एट दैट पॉइंट इन टाइम ये वो वक्त था कि जब मैं एक गारमेंट फैक्ट्री को गया पिच करने कि यू नो वी आर गिविंग वेब सॉल्यूशंस, तो उसका जो ओनर था उसने मुझे पूछा कि अच्छा ये IP ये तुम हमको वेब एड्रेस दोगे? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये क्या होगा? मैंने कहा देखें आज आप अगर ले लेंगे तो आपका एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, ये आपकी एक्सक्लूसिव, आपने नहीं ली तो किसी और ने ली तो कल आपको उसको पे करके लेना होगा। बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा सवाल उसका ये था कि मेरा प्रॉपर्टी का दाम तो हर साल बढ़ जाता है, इसका भी रेट बढ़ता रहेगा कि नहीं? there was a lack of understanding कि उसका वो अब जब मैं गया उस सेगमेंट को जिसमें मेरा इजीली टैप इन था, मुझे एक रियलिटी शॉक आया कि ये तो जो है दिस इज नॉट द सेक्टर दैट इज रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग।
at this point in time. So essentially we started, हमारा इनिशियल स्कोप उस ज़माने में जो था मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन होती थी एक चीज़, और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन तो ऐसी थी कि आप इसको देख लो, इसने कल अभी स्टार्ट किया है, रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो गई है, घर बन गया है, नैस्डैक में कंपनी आ गई है, नेटसोल बन गया है, ठीक है. सो ऑब्वियसली वी वर ऑल्सो, इत्तेफाक ये था दैट माई थर्ड पार्टनर वॉज अनदर प्रोफेशनल. He was working at Shell Pakistan at that point in time, and he was at a senior level. अब होता क्या है कि since मैं, somebody has to take the step forward. तो I was working at the bank at that time. तो my option was कि either resign or continue. मैं family के साथ छुट्टियों पे गया हुआ था. Anyways, I decided to resign to pursue this forward. What I'm saying is कि जब आप टेक्नोलॉजी को एक एंगल से देखते हैं, ये एक बज़वर्ड आपका क्रिएट हो जाता है कि इट्स डिसरप्टिव. इट इज नॉट डिसरप्टिव. You have not looked into the way of improving your business, because of which somebody else has come in and done that for you and made you redundant. क्या आज ट्रेडिशनल बिजनेसेस नहीं चल रहे? मेरे फैमिली का जो बिजनेस है दैट इज प्राइमरीली मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ textile and apparel machinery. This business is still going on for the last 50 years. The fact that a business, and मतलब मैं तो क्रेडिट भी नहीं ले सकता इसका क्योंकि बड़ों ने स्टार्ट किया, बट आपका चैलेंज फिर डिफरेंट होता है. जब आप एक एस्टैब्लिश बिजनेस में आते हो तो यू हैव टू मेक इट ग्रो. वो है ना कि यू कांट जस्ट, अगर उन्होंने 0 से 1 पर ले आया, 0 से 10 पर लेके आया, तो आप 10 से 20 नहीं, 10 से आपने 100 लेके जाओ. डोंट गेट डिसइल्यूजन. आपको अपने कोविड आया, ठीक है, सब बंद हो गया था. कैसे वही दुकानदार जो कल तक का आपको ऑनलाइन पे या व्हाट्सएप पे बात नहीं करते थे, वो व्हाट्सएप पे आपको भेज रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये डिलीवरी शुरू हो गई. सो व्हेन द मोड ऑफ डूइंग बिजनेस इज चेंजिंग, चेंज योरसेल्फ, अडेप्ट टू इट एंड गो. और इसमें मौला अली ने पहले ही फॉर्मूला दिया हुआ है, सिर्फ उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है. उन्होंने कहा सक्सेस इज द आउटकम ऑफ 2 थिंग्स, फोरसाइट एंड रेजोल्यूशन. ठीक है, आपको रिजॉल्व होगा बिजनेस करने का तो आप करोगे. जो ट्रिकी पार्ट है वो फोरसाइट है. उसको उन्होंने फर्दर डिफाइन किया कि फोरसाइट इज द आउटकम ऑफ डीप थिंकिंग एंड प्लानिंग. तो अगर आप सोचोगे, उसको प्लान करोगे, तो वो प्लानिंग को उन्होंने फर्दर एक की दे दिया कि इस प्लानिंग को जो करोगे, इसको बचाओगे कैसे दूसरे कॉम्पिटिटर से, तो उन्होंने कहा उसको सीक्रेट रखो. सही बात है, बेशक. नहीं, दैट्स अ रियली गुड पॉइंट आमिर. सो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि देखो, आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस को डेफिनेटली देखें. अगर आपके पास एक फैमिली बिजनेस ऐसा है जो शायद स्मॉल टू मीडियम लेवल पर है, आप डेफिनेटली उसको देखें, उसको इग्नोर ना करेंगे जी मैंने आईटी में जाना है, बट जो आपने स्किल सेट सीखा है उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके डिस्टर्ब करें और वहां पर चेंजेस लाएं. आई थिंक दैट्स अ की वन, दैट्स अ की वन देयर. सो इट्स नॉट अबाउट कि जी बस आईटी आईटी आईटी, अपने मॉडल को किस तरह से आपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. बट फ्रॉम दैट आई जस्ट हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर अली अंकल. सो अली अंकल, गिवन योर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, जो आपने पूरा करियर माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त गुजारा है and is still carrying on, the challenge for the youth today is a lack of patience. So हम कहते हैं जी बिजनेस हम आज डेवलप करें, आज हमने वो जो जैक एंड द बीन स्टॉक होता है ना, वो आज हमने रात को वो डाले बीज और वो पानी डाला, सुबह इतना बड़ा झाड़ हो गया, परसों उसमें फ्रूट आ गया, तरसों हम बिलियनर बन गए. सो प्लीज थोड़ा गाइड करें, एडवाइस करें ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, और डू यू थिंक दैट्स नाउ पुराने जमाने की बात है, अब उसको भूल जाओ, बस मेक रिच क्विक स्कीम करो, इंस्टा पे 4 फोटो लगाओ और किंग बन जाओ? Interesting question. There is no shortcut to hard work, first of all. But opportunity and luck plays along the way. Businesses, you don't start something and it starts flourishing and flowering immediately. It needs a lot of watering, hardship, patience. Failures are along the way. There are so many people who start businesses, but there are a few of them that pass through. It's not for lack of trying. Those who succeed are those who are resilient in their pursuit.
They fail, they get down, they start. They fail, they get down, they start. I mean, my own journey has been through this many times. When I personally when I stopped left the family business, I used to work for the Gokuls at that time, and I had like millions of ideas. You know, everybody loved my ideas, but eventually you have to sit down and choose one. And the important thing is you have to be, you know, what I advise people: do complete research on what you want to do. Complete research. Do what you make a very good business plan of what the thing is going to look like. Once you're ready, then Bismillah karo, you know. Then it's a matter of then climbing step by step. As far as I think Hussein said, and so did Amir, that funding is not an issue. I remember I was once asked to speak at invited at one of the Ivy alumni's dinner, and I said, look at you guys. The IB alumni is in every facet of the industry and manufacturing and everywhere. All you have to do is come up with a great business plan and float it. And I'm sure you'll find what you're looking for. That's a valid point. Please continue. So basically resilience, hard work, good management, those are what are needed. Failures are going to be along the way. So be ready to step over it. आई थिंक ये आपने बड़ा की पॉइंट आइडेंटिफाई किया है. लोग एंड ऑफ द डे जो हम बिजनेस की बात करते हैं, इट्स अ लॉट टू डू अबाउट स्पेशली स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस. आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू अबाउट प्लानिंग एंड रिसर्च. ठीक है, आपने अपनी प्लानिंग कर ली, रिसर्च कर ली, यू थॉट अबाउट इट, आपने अपने नंबर्स कर लिए, जो भी किया, बट उसके बाद एक लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ता ही है. आपको वो रिस्क तो लेना पड़ता ही है. अगर हम ये कहें कि जी मेरे पास परफेक्ट प्लानिंग है, परफेक्ट वो है, वो कभी कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज परफेक्ट क्रिएट ही नहीं करता सिवाय अल्लाह की ज़ात के. So, वो planning is important. That thought process is important. Obviously, you've seen a gap in the market. आप feel करते हो कि आप solution ला सकते हो. वो planning है, वो hard work है. उसके बाद जब leap of faith आता है ना, तो उसमें एक तो honestly in my personal experience, अगर आपकी नीयत साफ होती है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह we are very blessed कि हमारे पास तो इतना ज़बरदस्त university है with the 14 मासूमीन. Like we can't go wrong. जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी थॉट प्रोसेस है, अगर हम उसको सिर्फ फॉलो करें तो नीयत तो हमारी इंशाल्लाह हमेशा साफ रहेगी. हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हो, अल्लाह पे भरोसा करते हो, एंड एज अली अंकल राइटली सेड, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, बिकॉज 100% फेलियर्स होने हैं. देयर इज़ नो बिजनेस आइडिया इन द वर्ल्ड जो लोगों ने टेक ऑन किया है और उनका फर्स्ट शॉट में लग गया है. फेलियर्स होने ही होने, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. And that hard work and that resolve needs to be there, which is very important. And I think that's a key point for many of the young people here, जो ये सोचते हैं कि यार हम अगर फेल हो गए तो फिर क्या होगा. फेल हो गए तो कुछ नहीं होगा, वापस उठो और वापस लग जाओ. थिंक ऑफ इट डिफरेंटली, थिंक स्लाइटली आउट ऑफ द बॉक्स, बट डू नॉट गेट ना, उससे हमने घबराना नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली एक चैलेंज ज़रूर आता है जो हम सब अपने सर पर रखते हैं with regards to कि जी घर भी चलाना है, घर को वो जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इसका कोई राइट और रॉन्ग जवाब नहीं है. हाँ, एक राइट जवाब नहीं है, बट एक हमें गाइडेंस है कि बिकॉज आवर इंटेंशंस आर क्लियर, बिकॉज वी हैव एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ आवर इमाम्स, हम हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, एंड वी हैव द एबिलिटी एज अ खोजा कम्युनिटी, वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट DNA इन अस. हमारे अंदर, एज आमिर सेड, वो धंधा करने का दिमाग है. 2+2 4 को 4 into 4 16 कैसे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और हमारे पास अमेजिंग एग्जांपल्स हैं हमारी कम्युनिटी की. So that's something we really need to take away from this answer from Ali Uncle. Ali Uncle, that was very well said, that deep planning and that hard work. And which brings me to you, Hussein. As you are the youngest of the panelists, you'll get all the tricky ones as well. Huh? So yeah, let's have a fair and honest answer from the heart. ठीक है? फैमिली बिजनेसेस. सो अभी हमने आमिर से पूछा भी एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेसेस, वट एवर लेवल के हो, छोटे हो बड़े हो, इफ यू आर ब्लेस्ड इनफ दैट आवर फादर्स और आवर ग्रैंड फादर्स हैव डन समथिंग जो वो 0 से 10 पे करके आए हैं, वी हैव नाउ टू टेक इट टू 10 to 100 और 10 to 1000, विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट कितना प्रेशर होता है व्हेन यू जॉइन अ फैमिली बिजनेस. व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ फैमिली बिजनेस कि भाई माशाल्लाह इफ योर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स हैव हैड सक्सेस, and when you walk into such businesses, what is mindset क्या होता है, वो pressure क्या होता है, and why do you want to take that pressure on? This is a googly question that you asked. इसलिए मैंने कहा from the heart. Yeah. सारे पेपर फाड़ दो. पेपर ही नहीं है. Exactly. So the thing is that देखिए,
when it comes to family business or any business, there's one thing that will trump everything. It's passion. You have to be passionate about what you do. That is I'd say like what is the most common factor on what you do is passion. I remember when I came back, from the studies, and my bag was packed. So I came back in the night flight. तो सुबह कॉल आ गया भाई ऑफिस आ जाओ बोला बैग भी नहीं पैक्ड है आई डोंट केयर यू हैव टू बी एट 8:50 AM you have to be in the office yeah बैग भी नहीं अनपैक हुई this is the thing of family businesses it helps you with respect to certain traditions and thought processes and it gives you a platform but just because you have a family business doesn't mean it's going to do well or it's going to do bad business have life cycles as do human beings as do economies as do cultures but it's the passion that will take a business albeit a family business or a entrepreneur business that will give its longevity so yes is a family business advantageous absolutely but is it also a difficulty yes but at the same time if you're passionate and love what you do a real entrepreneur would leverage whatever they have in their favor to put the odds in their side. That is what a real entrepreneur will do. But the foremost thing is they have to be passionate about what they're doing. And then if you have a family business, that is to your advantage and you leverage that. One of the things that we have, we're saying, Mohsen is saying community A and all this. One of the things that we have is we have a community of business entrepreneurs. You all should be leveraging that as young entrepreneurs, household. If you have a business plan, run it through entrepreneurs, run it through your community, run it through. There's no shortcut to experience, but if a person can learn from others' experience, that's a blessing. So leverage that, and that's all I can say. I think you just taking the कहते हैं ना पतली कली पकड़ के भाग रहा है I'm gonna hold you back so you've spoken about the advantages थोड़ा सा disadvantage बताओ ना family business में क्या क्या challenge आए Yeah, so you see the challenges are you could be in a business that is not in the most efficient business model. You could be in a business that is in a difficult position. You could be in a business where you have to take certain challenges on board. So again, when someone comes in, now we've seen with many businesses the problem that has been is that the second generation or the third generation is not the most technically sound to take over that business, and that is a challenge that you have in businesses. So you've seen this businesses transform into corporations and into listed companies because the companies then outlive the family, and that's the longest form of businesses in the world today are listed companies because they outlive the family themselves, and it should always be that that the most competent person should be leading the business. This is my personal belief. And this is how it was even with the imams. I mean, it was not always the first son who was the imam. It was the chosen one who was the most competent from the Almighty, right? So same thing should be in family businesses. And this is what we've seen, the problems with family businesses, that their life cycle is shortened because the most competent authority does not get to lead their business and take it forward. So that's the challenges that you have in family businesses. And that's a really key point. और जब आप फैमिली में बिजनेस में एंटर होते हो ऑब्वियसली जो आपके एल्डर्स हैं आपका एक उनसे अलग रिलेशनशिप होता है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस विच इज़ मोर ऑफ अ पर्सनल वन एंड सडनली बिजनेस में आके टू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट कि उसको बिजनेस के तरीके से बात करना अपने चाचा से अपने फादर से अपने कजन से जो घर में आप एक डिफरेंट तरीके से बात करते हो वो बहुत बड़ा चैलेंज है. I used to call my dad sir in the office. So, it's like in the office it's sir referring to my sir, and then out of the office then it's not sir anymore. So, It's very difficult because आपको फादर ने कुछ ऑफिस में बोल दिया कि भाई तुम क्या you come back home and say मम्मी यार आज आप भूने जाओ you can't bring your problems back home इस तरह नहीं कि जी डैड ने डांट के हमें घर पे डंडा मार दे So then sometimes in the house also it was sir. Sir होता है ना exactly. नहीं I think the key point from this answer for me on a personal level is the technical sound part.
आई थिंक बहुत सारे लोग जो हमारे यंग जो हमारी यूथ है जब अपने फैमिली बिजनेस में एंटर होते हैं और वो किसी भी लेवल का हो, देखिए वो फर्क नहीं पड़ता, बट आपके फादर ने, आपके चाचा ने, आपके दादा ने एक जब बिजनेस क्रिएट किया होता है तो वो टेक्निकली वो सीख के आए होते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया होता है, तो उनको वो नॉलेज होती है। सडनली आप आ रहे हैं अपने ब्रिलियंट आइडियाज के साथ कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, वो कहेंगे बेटा हमें आता है, हम 50 साल से काम करते हुए हैं, तो वो माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है। बट उसके लिए आई थिंक हुसैन ने बड़ा की पॉइंट दिया है कि अगर आप पैशनेट हैं और अगर आप हार्ड वर्किंग और आप डेली बेसिस पर अपने काम पर टाइम पर जा रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं, देन आफ्टर वाइल ऑटोमेटिकली स्पेस मिल ही जाती है। और आपके फादर्स और आपके ग्रैंडफादर्स, आपके अंकल्स जो भी होते हैं, दे डू रियलाइज, बिकॉज लुक एवरीबडी जिसने भी बिजनेस बनाया होता है ना, उसने बड़ी मेहनत से बनाया होता है। सो फॉर देम टू जस्ट टू गिव इट टू एनीबडी जस्ट बिकॉज आप उनके चाचा बच्चे हो या भतीजे हो या पोते हो, नवासे हो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सबने पूरी जिंदगी की मेहनत की हुई होती है। सो वी हैव टू ऑल मेक आवर ओन स्पेस। So just building on that point. So like my first office, it was when we were making our factory, when it was being constructed. My first office was on the sand with 4 wood sticks and a tarpal and a table. That was my first office. That's where I started my work, and I was overseeing construction on the field, and with the AutoCAD drawings on my office in the heat. That was my table for 6 months, and then it was the workshop office. So you have to be competent. You have to prove yourself. Just because you're in a family business, it should never and it must never mean that you will be leading it. That's a valid point. Coming to you, Amir, the second, I think आप warm up हो गए, अब आप ready एक दो bouncers के लिए. So I'll ask you a very key question. I think challenge ये है कि हम बात तो कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, हमारे डीएनए में है और हमें जो है वो रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी लेगेसी, हमारी हिस्ट्री, वो तमाम चीज़ें। बट यार एंड ऑफ द डे घर भी चलाना होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली, ठीक है। सो एज अ यूथ ऑफ टुडे, ठीक है जी, मेरे दादा ने एक अच्छा बिजनेस किया था, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया और अब वो बिजनेस बंद हो गया या ऑलमोस्ट ख़त्म पर है। अब वो घर नहीं चला पा रहा, ठीक है। अब घर में प्रेशर है, शादियां करानी है, खुद अपनी करनी है, वॉट एवर द होल चैलेंज जो हर घर में होता है, हर घर का चैलेंज है, ठीक है। एंड दैट्स द वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर मेरे अंदर ग्रेट आइडिया है, मैं यूथ हूँ, मेरे पैशन है, ये है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, पैशन भी है, नीयत भी साफ है, आई हैव गॉट ऑल द थिंग्स टिक्ड ऑफ, लेकिन यार घर भी चलाना है। सो मैं क्या करूँ? मैं बिजनेस में रिस्क क्यों लूँ? मैं घर कैसे चलाऊंगा? मैं क्या करूँगा? प्लीज एडवाइस बताओ, फॉर अ यूथ, हाउ डू वी कॉन्कर दैट माइंडसेट? हम किस तरह से उसको बैलेंस करें? इट्स अ ट्रिकी वन और इसका कोई राइट जवाब नहीं है, इसलिए आप जस्ट आई एम गिविंग इट टू यू। हाँ, एग्जैक्टली। thing is कि it all boils down to कि faith is something जिसके इर्द-गिर्द आपकी जिंदगी रिवॉल्व करती है, all aspects of your life. Wherever you are driving, आप अपने faith को now better. So faith is very essential. अब उसमें मैं अपने लिए जो एक मुझे पर्सनली मेरी फेवरेट वो है, मैं उसी को कोट करूँगा कि एक हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, ठीक है। अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया मुझको, तो तुझे वो भी बख्श दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर मुखालिफत की तूने उसकी जो मेरी चाहत है, तो तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। बात ये है, I think he's a good candidate for your next. नहीं, अली अंकल इज वेरी एक्सपेंसिव, हम तो उसमें अफोर्ड कर सकते हैं। तो बात ये है कि फर्स्ट तो ये कि बिजनेस क्यों करें। चलो हमको डीएनए में ये मिल गया, क्यों करें बिजनेस? क्यों ना एक जॉब करें जिसमें सिक्योरिटी है, और आजकल अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओ, यू पुट योर हार्ड वर्क देयर, इट्स अ गारंटीड पाथ मोर और लेस, ठीक है। एक लेवल पे आके शायद आप टॉप पे ना पहुंचो, मिडिल में पहुंच जाओगे, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं जिंदगी की वो भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। दो चीजें, एक तो जो आजकल का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है,
उसके अंदर जो कंपटीशन लेवल है उसमें जॉब भी इज नॉट दैट इजी एनी मोर. देर इज वन स्पॉट, एक पोजीशन है, उसके लिए 10 लोग लड़ रहे हैं. ठीक है, मतलब आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी इमिक्स में जॉब हुई थी, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वंस अपॉन अ टाइम, तो आई एम नॉट दैट ओल्ड दैट मीन्स, बट जब मेरी जॉब हुई, मेरा अपना कुलीग जो कि आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड का इस्लामिक बैंक का हेड है इन यूके, ही वॉज competing for that job. और जब इंटरव्यू हो गया तो उसने मुझे कहा कि ये तुम जैसे लोग हैं जो हमारी नौकरी खा जाते हैं. तो बात ये कि मैं तुम्हें बात कर रहा हूं 1997 की. हाँ हाँ हाँ. मैं तुमसे एक वादा लिया था कि यूथ वाले सेगमेंट में डालोगे तो आऊंगा, वरना नहीं. तो 1997 was a time कि अगर आप IBA से ग्रेजुएट करो, आपका जो है GD जाती थी एम्प्लॉयर्स के पास, आपके पास 2-2, 3-3 नौकरियां आती थी, आप चूज करते थे कि मुझे कौन सी लेनी है. इतने उस वक्त ऑप्शंस थे कि भाई आपकी चॉइस होती थी कि मैंने नौकरी कौन सी लेनी है. ऑल यू हैड टू डू वाज ग्रेजुएट फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट. नहीं, अब तुम वाकई में बहुत ओल्ड हो, बिकॉज आजकल बिल्कुल ऐसा नहीं. ये प्रूफ कर रहा है तुम्हारी एज ना, ये सारी बातें. बट इवन इन दैट टाइम मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरा अपना कोलीग मुझे ताना दे रहा है कि मतलब तुम जैसे लोग हो जिनकी वजह से हमारी नौकरी है. आज मैं उसको रिवर्स में कहता हूं, अगर मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया होता तो तुम स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हेड कैसे बनते यूके. बट द थिंग इज कि बिजनेस करें क्यों. अब कुछ लोगों का पैशन है, एक शौक है, इसलिए करना चाहते हैं. मगर व्हाट डज रिलीजन टेल अस अबाउट दिस, मतलब रिलीजियसली हमें क्या बोला गया इसमें. अब इसमें अगर आप इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की सेइंग्स जाके देखो तो मैं तो शॉक्ड हो गया था देख के. मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कि दिस इज व्हाट बिजनेस है. ये तो हमेशा से बचपन से पता था कि भाई बिजनेस करना एक इबादत है, जो भी काम करो वो इबादत है अमंग्स योर ऑल द लिस्ट के हालात. उसमें उन्होंने मतलब एक बंदा आया, उसको जो है वो बिजनेस छोड़ दिया था, तो उसको इमाम ने रेप्रिमेंड किया कि तुम क्यों छोड़ दिया, तुमसे हो नहीं रहा है क्या. कहने लगा नहीं. तो बोला कि इस ये करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी वेल्थ कम होना शुरू हो जाएगी, और तुम जो है बिजनेस छोड़ के जो है वो अल्लाह की ब्लेसिंग्स को ठुकरा रहे हो. गो बैक टू डूइंग बिजनेस. दूसरा आया, उसने कहा कि जी बिजनेस क्या करना चाहिए, क्या मेरा ऑनर क्या है, उसने इमाम से पूछा. तो इमाम ने कहा इमाम ने कहा वो करो जिसमें तुम्हारे लिए ऑनर है. तो उसने कहा कि मेरे लिए व्हाट इज ऑनर फॉर मी. तो उन्होंने कहा कि ऑनर ये है कि जो तुम काम करते हो उसमें तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी मार्केट से आके तुम अपस्टैंडिंग हो और तुमसे जाके ले जाए. यानी तुम्हारी इंटेग्रिटी ऐसी हो कि दुश्मन भी मजबूर हो जाए कि जाके लेना तो इससे होगा, ये सही चीज देता है. जैसे मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं मैं सही चीज देता हूं. बिल्कुल. अभी मैं खरीदने वाला नहीं हूं मशीनें, प्लीज यहाँ नहीं बेचना. So the third thing, another instance happened, and he said कि business is something which leads to economic development, stimulates the mind. तो उसने आगे से पूछा अच्छा वो क्या करे जिसकी फैमिली है. तो इमाम ने जवाब दिया जिसकी फैमिली है उसका 9th-10th ऑफ हिज अर्निंग कम्स फ्रॉम बिजनेस. मतलब लोग कहते हैं ना भाई मेरी फैमिली है, मैं क्या करूं क्या नहीं. मतलब इसके अंदर इनहेरेंटली बरकत अल्लाह ने रख दी है. तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये काम करना. अच्छा आपको डीएनए में भी मिल गया, अब आपको जो है वो ब्लेस करके भेज भी दिया, अब उसके बाद भी पूछो कि क्यों करूं. हाँ नहीं है रिस्क है, नहीं. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. दैट्स अ वेरी, बस वो रिस्क है, लेकिन वही वाली बात है कि रिस्क लेके रिस्क के आप वो हुज्जत में है. नहीं प्लीज कंटिन्यू. सो बेसिकली इन दिस करंट एनवायरमेंट बात यह कि देर इज नो डाउट कि आजकल चैलेंजेस बहुत हैं. एंड लाइक हुसैन सेड एंड अंकल ऑल्सो एम्फसाइज
कि व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपनी स्ट्रेंथ देखो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है. अगर फैमिली बिजनेस है, ब्लेस्ड हो, जाओ, जाके जो सीख के आए हो उसमें इनकॉर्पोरेट करो. अगर वो 1 to 10 पे है, उसको 10 से 100 ले जाना तुम्हारा काम. क्योंकि हुसैन ने भी ये बात की कि ये हमको बचपन में सुनते थे हम लोग कि पहली जनरेशन बनाती है, दूसरी जनरेशन खाती है और तीसरी जनरेशन गवाती है या तबाह कर देती है. मगर ये कोई गिवन वो नहीं है. ये बेसिकली जैसे यूनी में हमको सिखाया जाता है कि ये कर्व है, ये कर्व ऊपर जाएगा, फिर प्लेटो करेगा, फिर नीचे आएगा. मगर अगर तुम इस कर्व से ऊपर वाली कर्व पे चले जाओ तो फिर एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी. फिर ऊपर वाली कर्व पे चले जाओ, फिर एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी. मसला ये है कि प्लेटो वाली स्टेज पे पहुंचने से पहले आपने कर्व को ऊपर ले जाना. जो बेसिकली ये जो कहावत है वो जो थर्ड जनरेशन खराब करती है कि बस वो आके जो चल रहा है उसको चलाते हैं. अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाओगे तो ये आपके साथ होना है. अच्छा, आई थिंक आमिर, थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया है फ्रॉम योर आंसर. यू नो, हम भी बात कर रहे थे पैशन की, हार्ड वर्क की, बिजनेस मॉडल्स की. आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव अगर हमारी सोचों में ये अगर सोच है कि मैं बिजनेस जो दूसरी वजूहात के लिए कर रहा हूँ उसमें एक वजह ये भी है कि वी वांट टू प्रमोट शीयत बाय डूइंग गुड क्लीन ऑनेस्ट बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली उसमें अल्लाह रिस्क देगा. और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल प्रॉफिट मोहम्मद है. यानी उनको दुश्मन भी इतना ईमानदार मानते थे कि वो रखते थे. सो आई थिंक ये एक बड़ा पॉइंट है जो हम लोग कभी कभार मिस कर जाते हैं. आई डोंट नो उसको मैं लैक ऑफ फेथ कहूँगा, लैक ऑफ फिलोसफी कहूँगा, मुझे नहीं पता. बट आई थिंक इट्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि अगर मैं अपनी इबादत करता हूँ अल्लाह की कुर्बत के लिए, अगर मैं कोई भी काम करता हूँ अल्लाह की कुर्बत के लिए, जो इवेंचुअली हमारा इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं हमें अल्लाह के करीब ही आना है. अगर हमारा बिजनेस का माइंडसेट भी इसलिए है कि मैं एक अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट करूं जिसमें इंटेग्रिटी हो, जिसमें ऑनेस्टी हो, और ताकि अल्लाह उससे अग्री करे, तो 100% अल्लाह ने उसमें बरकत डालनी. लाइक उसमें 90-95% की गुंजाइश नहीं है, 100% की है. So I think that's a very important point for us to actually take away from this seminar, if nothing else, you know, कि जो हमारा intention और objective है to run and set up our business, if it's for the qurbat of Allah and the promotion of Shiyat and for Ahl Bayt, obviously, then 100% उसमें guarantee जीत होनी है. शायद आज नहीं, चाहे कल नहीं, परसों जीत होनी है. और जो हमारा एक fear है कि घर कैसे चलेगा, घर का चैलेंज कैसे होगा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अल्लाह खुद बरकत दे देगा. बिकॉज इवेंचुअली अगर आप बिजनेस भी करते हो या जॉब भी करते हो, को हम थोड़ी चला रहे होते हैं, तो अल्लाह की बरकत होती है जो चल रहा होता है. वरना तो बड़ी बड़ी जॉब वाले, बड़ी बड़ी सैलरीज वाले, उनके घर में भी मसले मसाइल बहुत होते हैं. सो आई थिंक ये जो हमारा कॉन्सेप्चुअल कभी लैक ऑफ फेथ आ जाता है ना, जिसमें हम थोड़ा सा गैप आ जाता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, आई थिंक दैट्स वेयर वी हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. The intention has to be for the qurbat of Allah, for the integrity of the Shiyat, and I don't think that there'll be any, वो तो zero fail business plan है. Like अगर आप अल्लाह के साथ कहते हैं कि भाई आप अल्लाह की कुर्बत के लिए करें, I don't think उसमें तो कोई फेल का चांस ही है. सुनिए आमिर, that's a very very valid point. और मैं फिर भी मशीनें आपसे नहीं लेने वाला हूँ, तो प्लीज आप कोशिशें छोड़ दें ये वाली करना. कोशिश करना हमारा काम. आपका काम है, तुम्हारी चाहत और मेरी चाहत है. अच्छा अली अंकल, कमिंग टू यू. सो अंकल आप बताएं, आई मीन लाइक यू माशाल्लाह had a career behind you. As of today, with your experience that you have, what are the 2 or 3 key points that you think are critical for any business to succeed? So हमने passion बात कर ली, hard work बात कर ली, but ये जो the model that we talk about, that how, if जैसे you said about the planning and research, but at some point you have to make that choice between option. आपने ना बहुत सारे ideas थे, ये idea, then eventually you have to choose one. So if I am a person of today, आज मैं का youth हूँ who has 7, 8, 10 brilliant ideas, मेरा key criteria क्या होना चाहिए in choosing the idea to bet on, या उसमें मैं अपना faith लगाऊं? देखिए, it's basically, I mean, Hussein talked about passion and so did Amir. But it depends on your own metal. What are you made of, you know? If you want to launch into a business, then and you have a family, or there are 2 different scenarios. Either you're starting off on a business and you have no responsibilities. You have a family that is a father,
either is in service or running a business. So the house is taken care of. So that makes it easier for you to get into a venture. Basically, although I'm repeating myself, but hard work and planning are exceptionally important in choosing your field. I mean, you like Amir said about the IT, like everybody's into IT or suggesting IT. IT may not be everybody's piece of cake. It may be retail, it may be construction, it may be manufacturing, although on a small scale. Or choose an industry where you have a small niche for yourself. For instance, only last week somebody approached me for, kind of a financing, and said it's related to plastics. He said there's a big demand. I mean, like these bottles, PET bottles. Today you can the empty bottles can be sold at an exceptionally good rate. Once you have. But the wrappers that you have, they get dumped into the waste, and they are not biodegradable, or they are at a certain point. So somebody approached me and he said that we are addressing that segment of the market. So that becomes a niche market, and one of them is apparently one of our Khoja brothers as well in it. And they've come up with a plan, and they've marketed it to Unilevers, they marketed it to Pepsi, because there is right now all these big multinationals are required to come down on their environmental roadmap. They have to reach a certain plateau. So here comes somebody who's researched, done some thinking, done some interesting analysis, and has come up with a plan of converting this into a building material. So there you go. It's a matter of your mindset. Is your mindset business? Is your mindset employment? When you're doing business, you're creating a lot of employment as well, because you're contributing to society. So although I'm wandering off the subject, but अगर mindset में business है, passion है, and support hai. And I always told anybody who came to start a new business, I said, have you kept a reserve for your next year, year and a half, 2 years? Then step into it, and try it. Hani, I think that's an excellent answer. I think एक जो आपने बात की, which I will pick up on, and I think ये challenge हमारे साथ बहुत होता है, especially एक हमें mindset होता है जी business करना है, business क्या करें? 10 प्लान्स हैं, 12 प्लान्स हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं. आई थिंक एक मेंटालिटी आ जाती है एट अ यूथ लेवल, इट्स अबाउट बीइंग अ शीप, कि यार मेरे दोस्त ने भी किया है, उसने भी किया, मैं भी ये कर लेता हूँ, क्योंकि हर कोई उसमें कमा रहा है. आई थिंक ये अली अंकल ने जो वैलिड पॉइंट दिया है कि यू हैव टू फर्स्ट अपने आप को फिगर आउट करो कि मैं कौन हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, नॉट नेसेसरीली कि जो आपके दोस्त ने किया है आपके अंदर भी वही स्किल सेट हो. बात ये है कि आप अपने आप को कितना बेहतर समझते हैं. So as I think the most important advice from Ali uncle here for the youth is के अपने आप को समझो, understand yourself as a human being, and then figure out what works for you. कौन सा plan आपके लिए best है. जरूरी नहीं कि जो plan आपके दोस्तों के लिए work किया है वो भी work आपके लिए करेगा. आपके nature को देखते हुए आपके लिए best plan कौन सा है. So it's very important to understand and know yourself. I think ये एक evolving situation होती है. Obviously nobody knows themselves at 20, 21, 25. थोड़ा मुश्किल होता है. But I think it's a very important mindset to have. Let's not be a sheep कि सब लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी वो कर लूँ. सबने जी वो भैंस का फार्म लगा लिया, हम भी भैंस का फार्म लगा लें. सबने वो कर लिया, हम भी वो कर लें. Let's not do that. Because अगर आप वही करोगे जो 50 लोग और कर रहे हैं, तो फिर इसमें वैल्यू ऐड क्या आ गई, उसमें एक्सेलेंस क्या आ गई. एंड देन आप सिर्फ लोगों से पूछ रहे हो जी इसका बता दें, उसका बता दें. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका स्किल सेट क्या है, हम कौन है, and then go for that business plan, because obviously options बहुत होते हैं, but the deep planning और जो research का हिस्सा है ना, उसका एक बहुत key point है know yourself. I think that's a very valid point, Ali Uncle, that you've brought on, and that is honestly for me this is one of the most important points for this answer for this one. Talking about Bhais ka farm, if you know, a few years ago
A lot of the community went into it. मैंने इसीलिए कहा वो भैंस का फार्म और स्टॉक मार्केट जब हम निकले थे तो वो दो भैंस के फार्म घुस जाओ या स्टॉक मार्केट में घुस जाओ वो दो ही चीजें थी. Although And- it's mind you, it's an excellent business. If somebody had done it very well, I mean, from the product, right from the milk down to the waste, it's all usable. You know, if somebody had done it, it's an excellent business. हाँ भाई लेकिन बिजनेस तो अलियन का सारे अच्छे हैं ना भाई. एंड ऑफ द डे बिजनेस सारे अच्छे हैं बिकॉज लोग एंड ऑफ द डे आप अगर बिजनेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. प्रॉफिट में सेल्स माइनस कॉस्ट है. बट एज यू सेड आई हैव टू नो माई सेल्फ. अब जिसने ये पूरा बनाया है फ्रॉम द मिल्क टू द वेस्ट उसका माइंड ऐसे काम करता है. उसका माइंड भैंसों के लिए काम करता है. अब मेरा माइंड अगर भैंस के लिए काम ही नहीं करता तो मैं तो फंस ही जाऊंगा ना. तो कैसे निकलेगा दूध. बट नहीं एनीवेज आई थिंक द की इज टू डेफिनेटली नो योरसेल्फ. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So यार ये मुझे बताओ माशाल्लाह coming from a well reputed family coming माशाल्लाह they have done amazingly well in the community. They do a good work in the community and business उसके अंदर भी. तो प्रेशर कितना होता है as being part of this family when you walk into business. आप बिजनेस को माशाल्लाह ग्रो कर रहे होते हो. ऑब्वियसली आप ग्रो कर रहे हो तो उसके साथ रिस्क भी बहुत बढ़ जाते हैं. सो हमने ये तो बात कर ली कि जी जीरो फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करना ये करना है. बट फॉर पीपल लाइक योर सेल्फ जिनको एक माशाल्लाह अच्छा बिजनेस मिला हुआ है और वो स्टेप इन करते हैं ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है ऑन योर ओन सेल्फ. सो वो फियर जो दिल में होता है कि यार व्हाट इफ इट ऑल गोज डाउन. कि लोग कहेंगे देखो जी बाप दादा ने तो इतना अच्छा कर लिया. ये आया इसने 3 हवाई फायर की और गिर गया. इट्स अ बिग प्रेशर आई एम श्योर. सो हाउ डज दैट वर्क प्लीज जरा शेयर करो. So, with business, and yeah, okay, the pressure is enhanced. The pressure is definitely enhanced. But as with any entrepreneur or any business, I always view it as an iceberg. अगर आपने iceberg देखा होगा तो when you're looking at it from the ship, you can only see the top part, and the top part looks like it's it's not that big of a blockage or you can easily maneuver it. But जो नीचे का जो हिस्सा होता है, I think it's like about like 5,000% of the mass of that's on the top. Titanic knows exactly. So it can take down the unsinkable ship even. So that's how it is. What people see is the success on the top, but they don't see the thing. And I'm sure as a Khoja community, many of your parents and your relatives, you've seen the same. So with business, everyone looks at the top, but there's a lot of sacrifice, there's a lot of effort, there's a lot of risk, there's a lot of hardships that is there. And that's why I'm a firm believer that you have to love what you do, because a rational person will look at a very successful entrepreneur and come to one conclusion: this person is insane. That's it. Why? Because they will work the longer hours, they will take the risk, they will take things that they don't know what's the outcome on. The environment might not be conducive, but they will do it. And that's why to be a successful entrepreneur, you have to be a little insane. And I guess as Abul Hassan says, it runs in our blood. I guess we're a little insane, and maybe that's where the warrior aspect comes in from us. But you have to, you have to take the risk, and it's definitely much more enhanced, and the iceberg is much bigger when the higher the stakes, the higher the risk. But there's one thing that really helps me personally is faith, and I tell my wife always that we are so lucky to be Shia. We are so lucky that we have the role models that we have to look up to and to follow. And that I think is one of the strengths that I personally get. And as the brother here just said, all the wonderful things, so much wisdom is there. This is a strength that we have as a community, and if we really leverage it, as I said, entrepreneurs use whatever they can to their leverage, and that's what I personally have overcome. But there's no guarantee of tomorrow. मैं तो कहता हूँ कल की जिंदगी का नहीं पता, अगले घंटे की जिंदगी का नहीं पता, तो आगे बिजनेस के क्या पता होगा. जब कोविड हुआ था, if anyone asked me what was going to happen, I asked them, what do you think was going to happen? Sometimes you don't have the answer, sometimes you don't know the future, but it's the passion and it's the belief that helps. And in the belief system, the religion that Allah has blessed us with, subhanallah, it's everything.
That's a good way to handle the pressure. I think that's a really good one. So आमिर, एक और सवाल आपके लिए खास. अच्छा. So मजा तो ये होता है ना कि जी कहते हैं जी बिजनेस करना है तो ऐसे अली अंकल सर स्टार्ट बी योर ओन बॉस, कि अपना बॉस बनेंगे भाई, किसी की जवाबदारी नहीं है, ये नहीं है, पैसा आएगा ये सब करेंगे. बट मैं जब तुमको रात को 11 बजे फोन करता हूँ तो तुम तो अवेलेबल होते हो. तो ये जो बी और बॉस का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं जी, तो ये कितना कोई देखें, इट गिव्स यू लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इसके साथ इसकी जिम्मेदारी क्या आती है फ्रॉम बीइंग योर ओन बॉस, लाइक यू हैव टू वर्क longer hours, as Hussain was saying as well. इसकी importance कितनी है in terms of being there for the business 24/7? And इसको I have a follow-up question as well, तो उसको करके then I'll ask. Okay. So basically, like Ali uncle said, Hussain said, के challenges, all the problems, everything lands in your bucket. और जब ये होता है तो मतलब जब आप अपने बॉस होते हो, सो बिफोर कमिंग हियर, सो माय डॉटर आस्क्ड मी कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा वो सेमिनार है उसमें जा रहा हूँ. तो कहने लगी क्या सेमिनार है, मैंने कहा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे, फैमिली बिजनेस पे. तो कहने लगी अच्छा. मैंने कहा तो तुम्हारे ख्याल से क्या, व्हाट शुड आई टॉक अबाउट. सिंपल है, कोई मसला नहीं है. मैं कहा क्या, बिजनेस होगा तो सेठ बनेंगे ना, बिजनेस नहीं होगा तो सेठ कैसे बनेंगे. So that is one side of it. But basically ये है कि like Ali uncle said, like Hussain said, कि अगर आप dedicated नहीं हो ना, you have to enjoy it. मतलब if it is a burden on you तो नहीं करो, it's not for you. ठीक है. But if challenges in life motivate you, ठीक है, not all the time, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो ये वो सारा वक्त ये चीज़ें एंजॉय कर रहा होता है. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ. बट सी, आप जब जॉब जाते हो ना, 5 बजे आपका मीटर ऑफ हो जाता है, घर आए, फिर उसके बाद इट्स नॉट योर हेडेक कि चाहे 5 आए 6 आए वट एवर. विद बिजनेस दिस इज नॉट द केस. 24/7 ऑन कॉल. वो एक डॉक्टर वाला हिसाब है जो इमरजेंसी में काम करता है. ये हम सेमिनार बिजनेस इनकरेज कर रहे हैं, बिजनेस से भगा रहे हैं थोड़ा सा हम उसको ऑफिस. हाँ, बट वो जो डॉक्टर इमरजेंसी में काम करता है वो क्यों करता है, हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे जब एक चैलेंज से आप फेस होते हो, उसको आप ओवरकम करते हो, इट डज 2 थिंग. एक, इट एनहांसेस योर फेथ. आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, ये मेरे अकेले की बस की बात तो नहीं थी, इसका मतलब कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, जिसने हालात को ऐसा कर दिया कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया कि इसको इस तरह करूं. जी, एट द एंड ऑफ द डे कोई होशियारी काम नहीं आती. जब कोविड आया, ठीक है, सब लोग परेशान थे विदाउट फेल. हमारे ऑफिस में भी ये डिस्कशन, माय चाचा, अस, माय कजिन्स, वी सैट डाउन टू डिस्कस के यार क्या कर रहे हैं, मतलब 2 महीने से ऑफिस बंद है, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस इज. तो एक जनरल पॉइंट उठा कि भाई मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सैलरी कट कर रहे हैं, या तो कट्स दे रहे हैं, या डेज ऑफ कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं. तो वी डिस्कस कि भाई अभी तो चलो हम 2-3 महीने तो वी कैन सस्टेन फ्रॉम आवर पॉकेट, उसके बाद हमें भी यही करना होगा, वी डोंट हैव अ चॉइस. वी सेड अच्छा अभी तो फिर 1 महीना गुजरा, फिर नहीं खुला, फिर ये बात वापस हुई. सो देन व्हेन वी सैट एंड डिस्कस, वी सेड नहीं, वी डोंट वांट टू डू दिस, लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ एन आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन फॉर दिस. बिकॉज ये वो वक्त है कि जहां इन फैमिलियों को जरूरत है इसकी. इफ वी गो एंड कट दिस, सो आवर होल बिजनेस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सर्विस प्रोवाइडर जब आप होते हो, आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं वो आपका एसेट होता है. अगर वो डिस्टर्ब होगा, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, आज नहीं तो कल. और वो इस चीज को याद रखेगा बोथ वेज. अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग मेमोरीज नहीं होती, तो फिर भी थोड़ा टाइम तो रहता है. सो एसेंशियली वी सैट डाउन, वी डेवलप्ड अ प्लान. जहाँ स्टेट बैंक की कोई स्कीम आई हुई थी, वी डिड द नंबर्स. हमने देखा कि अगर हम अपने पेरोल को
इस तरह करके अपना जो कैपिटल है उसको फिलहाल इधर इन्वेस्ट कर दें, स्टेट बैंक से ये वो ले लें, तो फॉर अनदर 3 months वी कैन रन द बिजनेस विदाउट कटिंग. We did not cut a single penny of our staff for one day throughout of COVID. बिलीफ से चल रहे थे, कुदरती हुआ ये कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारा काम तो वापस से चल गया. So I mean like the interesting thing is, and I know कि हम इसकी बात करते हैं और शायद इसकी इतनी importance हमें शायद समझ में नहीं आती, but genuinely मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये, एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम भी यही बोल रहे हो कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो आप खुद रियलाइज करते हो कि आप कितने बेबस हो, और आपको वाकई में अल्लाह की रहमत पे, अल्लाह की उस पे इतना बिलीफ बढ़ जाता है कि आप जेन्युइनली रियलाइज करते हो कि ऑनेस्टली एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर नथिंग. आपको हर जगह पे डिफरेंट मतलब लाइफ के इंस्टेंसेस पे बिजनेस साइकिल में डेड वॉल आती है, सबको आती है, जो जिंदगी में भी आती है, जो जिंदगी में भी आती है. सारा चीज ये कि अगर उस वक्त आप उस पे खड़े रह जाओ अल्लाह तवक्कल पे, तो आपको रास्ता मिल ही जाता है. बट आमिर, तो ये तो फिलोसफी फॉर लाइफ है ना, ये अल्लाह तवक्कल वाली जो बात है. आई मीन आई थिंक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 3-4 दफा ऐसा हुआ है वेयर वी वर ऑलमोस्ट क्लोज टू कि बिल्कुल एज पर आ गए अब बट लिटरली लाइक 2 महीने की तनख्वाह बस पड़ी रह गई एंड दैट्स इट. बट आई गेस अगर आपकी नीयत साफ होती है, आप अल्लाह पे भरोसा करते हो, आप चलाते हो, बिकॉज सिर्फ आप अकेले नहीं खा रहे हो, बहुत सारे और घर भी चल रहे होते हैं, उसमें हम उस मसले से बाहर भी निकल आए. सो आई थिंक द बिगेस्ट लेसन फॉर मी एज ऑफ टुडे, मुझे आज 25 साल हो गए काम करते हुए, ये मैंने रियलाइज कर लिया है, आई थिंक आमिर ने भी अग्री किया हुआ है कि हमारी होशियारियाँ जीरो है. वी नो नथिंग. आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई नो आफ्टर 25 years इज आई नो नथिंग. जो भी है वो अल्लाह का. हाँ, और मुझे जो करना है वो साफ नियत रख के, हार्ड वर्क करके अपने काम पर जाना है हर रोज, और किसी का हक नहीं मारना है, कोशिश करके, और जितना बेहतर मैं कर सकूं, बाकी अल्लाह सबको चल रहा है. सो मेरा जो फेथ इतना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ना. ऑनेस्टली एडवाइस जो भी हमारे यहाँ पर यूथ हैं, जो हमारे यंगर लोग कभी कभार घबरा जाते हैं, ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट द फेथ. आपकी नीयत स्ट्रॉन्ग होगी, आपको अल्लाह विल ऑलवेज गाइड यू, बिकॉज आप अकेले नहीं होते हो, आप बहुत से लोगों का घर भी चला रहे हो. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा, अब मैं आप लोगों को तंग तो कर रहा हूँ, मैं बहुत इजी एक सवाल बना रहा हूँ और आप लोग तीनों से 1 by 1 पूछूंगा, इसलिए आप लोगों को टाइम मिल जाएगा. अली अंकल पहले आप बताएं, शुड आई आस्क यू या आमिर से शुरू करूँ? आमिर साहब, ताकि आप रेडी है जाके. सो अली अंकल विल गेट द एडवांटेज ऑफ हिज सीनियरिटी. एडवांटेज पॉइंट अली अंकल. या हुसैन पे हम पहला सवाल हुसैन को ही दे दें हम, मेरे ख्याल से. आई थिंक यंगेस्ट फर्स्ट, आई थिंक ये करते हैं. हुसैन, विल स्टार्ट विद यू, देन आमिर, देन अली अंकल. सॉरी बडी, you got the short stick. Okay, so look, end of the day, let's talk about community. Mashallah, many people are here, they want to understand कि हम अपनी community को, the people in our community, ठीक है, how do you suggest that we can help them to evolve their mindset more towards trade, towards businesses? What can we do as a jamaat, as like for example creating a body or things like that? Yeah, what do you suggest that we should be doing on our side to promote, to encourage the members of our community to come towards trade, towards businesses, and hopefully be able to get that leap of faith? A very good question, and put me on the spot first. तीनों को मिलने वाला है, तो please prepare हो जाओ. Before I answer this, I want to see a show of hands. How many people here are already entrepreneurs? MashaAllah. And how many people here are aspiring to be entrepreneurs? MashaAllah. So the best answer for you would be, that I could give is lead by example. So the first thing I could say is, for all the aspiring entrepreneurs, I personally am willing to start a fund for the community today. And whoever is an aspiring entrepreneur, you give your business plan in, and I would like to invite other entrepreneurs part of this community, like a hukum say, and with the approval of Abul Hassan Bhai and the community, I can already announce a 5 million rupee fund, and if anyone wants to enhance that further, I'm more than happy. And ले लो इनसे, क्या आगा कह रहे डिपॉजिट चेक दे दो, वो कर लो, फिर बातें कर लेंगे. And I would like to also PKR.
Don't stretch your luck. कौन से रेट पर ये भी पूछ लें, आजकल फ्लक्चुएशंस आता है. We can. I was going to say Rani Real, but chalo, we'll stick to PKR. I'll Although be the happy heart is to- there. I'll be happy to match it also. See? Oh, mashallah. Thank you, Ali Uncle. Mashallah. So we've already got a match. So look at that. So that's what entrepreneurs do. They lead by example. So there you go. I've just taken this initiative to lead by example for the community. We've taken, Allah ke hukum se, we've taken this initiative. I would invite you also to please be a part of this, and you also to be a part of this, and to make it formalized, submit your proposals like this. Whoever has the best business plan, there you go. You've got the funding, make it happen. Lead by example. There you go. चलें हुसैन, that's a great start, mashallah. And from a Jamaat perspective, definitely what we will do, जो Jamaat की हमारी current team है, obviously is we could try and organize it, structure it in a way so that this fund is matched with the right proposals and all that. These proposals will obviously be coming to, we'll form a committee और उसको इंशाल्लाह organize करते हैं. But thank you, that's a great start, Hussain. So then what this will further enhance the community spirit of entrepreneurism, and it will and inshallah may it create further wealth for the community. Inshallah. Amir, same question to you, buddy. So apart from the funds, obviously, how else can we kind of help? Obviously funding is a very important part of it, but उसके साथ advice भी है, because plan तो मेरे पास भी है, सबके पास है, but उसको चलने में जो challenges होते हैं business plan. So what do you suggest? Based on the current economic environment, it is important कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो उसको आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. एक जो फिलॉसफी दैट वी वर टॉट इन यूनिवर्सिटी के जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई फील इज वेरी एसेंशियल, एक फॉर्मूला था, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, स्केल क्विकली. सो दैट मीन Scale to? think big, start small, scale quickly. Scale quickly. Okay. So basically, when you're starting a business, you have to have your end goal in mind. कि मुझे कल इसको कहाँ लेके जाना है. ठीक है. Start, आप उसको वो business में जाओ कि जिसको आप छोटा start ले सको and then grow करो. Because everybody has limited capital. Nobody has unlimited capital. So you have to plan your business accordingly in that sector. Secondly, what I personally feel is that in the current environment, any business that you're doing in terms of export or trade is the segment that you should be looking at, other than IT. Okay. Even ITB is an export business because आप services export कर रहे हो. ठीक है. So these are businesses going forward. I feel के यहाँ पे वो है. And mostly, I think most people who start out with a business plan या business plan बनाने में they need guidance the most, and there has to be some mechanism in which people from different segments with different expertise said कि जो community में ही हो, वो business कर रहे हो, वो उसका कोई source tap करने का base बने कि जहाँ पे these new people can come and take advice on their business plan and refine them and educate them or help them how to do that. So funding के साथ साथ Funding तुम ये के बोल रहे हो साथ कि साथ. hand holding भी जरूरी है, at least in the Yes, first, because yes. especially for the aspiring entrepreneurs. Yes. Because many a times what you're saying is कि idea and intention सही होते हैं, but the way to go about it में वहाँ लोग फंस जाते हैं, उनको experience. And इस चीज में if Ali uncle can spare some time, he is the best person to do this. Oh, definitely. Like funds तो हैं, but इनका time is more. इनका like, time is honestly, more important more than the important, funds. Definitely नहीं. ये तो for sure है कि ये जो भी चीज होगी, Ali uncle is going to be a part of it because with the See, experience because that he I comes in. still remember that start में उन्होंने कहा कि multiple ideas थे, उसको scale down करके एक idea पे. नहीं, definitely. ये सबसे मुश्किल काम होता है because जब मैंने भी अपना IT business start किया था, तो we went into medical transcription. जब वो business formulate होके चलने लग गया, तो there was no medical transcription. We were doing web-based applications. The whole model had transformed. जो मेरा partner था, वो ERP solutions करना चाह रहा था. अब finally वो कर रहा है. Now that I'm out of it, but 6 months में we had to modify the whole plan. पैसे खत्म हो रहे थे.
आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बट नहीं, आई थिंक फॉर दिस द एक्सपीरियंस इन हैंड होल्डिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. I will just, before I come to Ali uncle with the same question, Ali uncle you have plenty of preparation, आपको मिल गई है. Just 1 minute, रजा या जैन प्लीज मुझे बता देना, बिकॉज जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ टाइम का. तो प्लीज लेट मी नो कि मेरे पास टाइम कितना रह गया है, सो दैट, सॉरी, हाँ, so Ali uncle, please same question to you. After this question, okay, thanks. जी Ali uncle. So I've taken the liberty of doing some research, some doing thinking, and I made some notes that how can you support youth to come into entrepreneurship? First of all, it's education and awareness. So, like for instance, we have, mashallah, a string of schools and colleges. Incorporate entrepreneurship in your studies, make them aware from the time that they are in their inter or doing the graduation, that there is a field called entrepreneurship which you can go. And mashallah, Abul Hassan himself at one point was teaching this as a subject in IBA itself. Then you need role model and mentoring, and you have these young people who are really our role models, and community is proud of them, that how they have led their own industries. Then brainstorm sessions. People who opt for entrepreneurship make a group of people and do some brainstorm session with the leaders or role model, or who can mentor them basically. Then networking opportunities with different owners of industries or companies, or of course once the plan is made, then like Hussein just floated the idea, have access to resources that can launch them into the field. Above all, and very important, is resilience to failures. That there will be failures, and have that resilience that I will still, and that comes in the word that Hussein used, and so did Amir, is passion to do business. And of course, above all, you need your own family support in this venture when you get ahead. Super. So basically, I think the summary ये जो है on guiding our youngsters towards the community is basically, obviously there has to be a plan जो सब aspiring entrepreneurs के पास होता है. They need finance. Alhamdulillah, we've got this community support जो finance के लिए भी हमें help कर सकते हैं. Then we've got the important point of hand holding and mentoring. बिकॉज वो प्लान तो बड़ा अच्छा होता है और पैसे भी मिल जाते हैं, बट एज यू स्टार्ट ऑन दैट, एज आमिर सेड, आप शुरू यहाँ से ए से होते हो और आपको जाना होता है एफ पे, और आप जी पे निकल जाते हो. सडनली आप रियलाइज करते हो कि एफ तो था ही नहीं, मैं तो जी के लिए बना हुआ था. वो ऑब्वियसली वी ऑल इवॉल्व एज पीपल. So that is the hand holding and mentoring that is needed, and obviously as Ali uncle said, networking. And I think alhamdulillah we are very blessed to be part of a community where the networking the networking opportunities for us are amazing. I think, to be honest with you, देखें इस इन सेशंस का मेन पर्पस यही है टू स्टार्ट थिंकिंग बिगर एज अ कम्युनिटी. आई थिंक हम कभी कभार लिमिट हो जाते हैं due to many factors around us in terms of risks, in terms of ये challenges. We have to start thinking bigger as a community. Only then can we grow. वरना हम, और उस वक्त पॉसिबल है जब हम एक दूसरे की हेल्प करें. कभी कभार हम बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं, बट जेन्युइनली नॉलेज शेयर करने से नॉलेज में खुद का इजाफा होता है और दूसरों का भी होता है. आई थिंक दीज आर वेरी की पॉइंट्स फॉर अस टू टेक अवे फ्रॉम दिस एज अ जमात टीम and on a smaller scale, and then obviously as a community at a wider level. It's our responsibility to create that infrastructure. Alhamdulillah, we're lucky with Abul Bhai as president to have a structure, at least a person who understands, because वो खुद भी सिखा चुके हैं ये courses, so he understands कितना important है network बनाना. तो इंशाल्लाह we will definitely work on these things. But it's been an amazing session honestly with you guys. But अभी हम थोड़ा question answer करते हैं, because मैंने बहुत पूछ लिया. अब मैं ज़रा पानी पी के break लेता हूँ, तो हम floor पे जाते हैं कि please for any questions. Just one question, Raza, Zain, do we have a mic or how does it work? Okay, so यार मुझे I'm so sorry, तुमने schedule भेजा था लेकिन आज मैंने पढ़ा ही नहीं. What time do we have to finish? It's 15 minutes. So we will try and have at least 5 to 6 questions if we can. Yeah. So have the questions ready, or how's it working? Please, किसी के पास कोई भी सवाल हो तो please, बिस्मिल्लाह.
जी शुरू करें. आपका नाम क्या है? My name is Manahil and I am currently studying at IBA. I'm doing accounting and finance. Okay, so my question was that I also own a startup, a small startup. It's a marketing agency, or you can say creative agency. The challenge I am facing, and I wanted to ask that how can we overcome that challenge, is that, for example, if I have a business and I want to pitch in to someone, how can I make a person trust me as a new startup? Because either it is with reference, a reference based thing, and other thing is that we go to pitch in the to businesses. But again, that also comes with a reference, that if we have a reference, if we have someone who we know, we can go to pitch in, or else a big company can never ask us, or even small companies, they need experience. And for a startup, how can we gain experience to get experience basically? तो ये बताओ, who do you want this question answered by? Because Anyone. you can choose. Anyone. It's fine. I'm giving you the opportunity. The power you have. The first thing to do sell your business is to take the power. Go on, Okay, choose. so you said that you pitched in the Amir, business. please, over to you. You are an IBA student or you've graduated? I am an IBA student. I'm fourth year. Okay. So for you, it's not that difficult actually. You need to tap into your IBA alumni, utilize them who are in the marketing field, use that network. That is what I had done. That's why I'm sharing with you exactly the same thing. So when I started my IT business, like I said कि पहले जो है मैं ये अपना फैमिली बिजनेस का जो कस्टमर बेस था उधर गया, तो वहाँ अब उस वक्त वो अवेयरनेस नहीं थी. सो देन आई हैड टू रिवर्ट बैक. व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि मैं अपने आईबी अलुमनाइज जो मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे थे उनको कोल्ड कॉलिंग करके उनसे अपॉइंटमेंट लिया थ्रू द जीडी. आई फाउंड अ कॉमन कॉन्टैक्ट के जो आईबी में मेरे भी फ्रेंड्स थे, उनके भी वो थे, एंड देन उनसे अपॉइंटमेंट लेके जाके वो दिया. बट सी द थिंग इज कि आप अगर रन ऑफ द मिल काम कर रहे हो, you need to have a niche. You cannot go and pitch what every other person is selling and expect them to help you out. So you need to do your research first. If you're approaching a particular company, उस company से जाने से पहले आप पूरा homework करो कि ये क्या कर रहे हैं. जैसे जब मैं MSD के पास गया था, Merck Sharp and Dohme जो एक pharmaceutical company है, तो I was lucky also. वो जो एक वो बात होती है ना कि भरोसा भी होना चाहिए, तो इत्तेफाक ये हुआ कि देयर वाज अ सीनियर जो ग्रेजुएट कर चुका था. ही वाज एट अ पॉइंट इन टाइम वेयर ही वाज ग्रोइंग अप द लैडर इन द कंपनी. ही वांटेड टू मेक हिज मार्क. तो वो चाह रहा था कि जितने भी ईमिया रीजन है, यूरोप, ईमिया इज यूजुअली यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, उसमें वो चाह रहा था कि वो अपना आप को प्रेजेंट करे. सो दे स्टार्टेड दिस वेब बेस्ड एप्लीकेशन का बिजनेस MSD कर रहा था वे फॉर याहू. द प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड माई याहू फॉर फिजिशियंस. दैट वाज द फर्स्ट टाइम. ये वो दौर था जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, पाम पायलट्स होते थे ग्रीन कलर के, मोनोक्रोम कलर के. बट ही वांटेड टू डू दैट. वी गेव हिम एन आइडिया of what to do. So you need to do your groundwork, then look into your alumni base, tap in the network there, and then see and go pitch. But you cannot go and pitch a run-of-the-mill product. A Me Too product does not have any position. I hope I've answered you. Thank you. Thank you. Next question, please. Can I just add to that? Just keep knocking on doors till you break one, you know. Walaikum Assalam. Assalamualaikum. My name is Ali Qasim. I am recently graduated from Akron University and I am currently working at Mizan Bank as a PBO. So my question was from Mr. Amir. The question is, sir, COVID के दौर से like digital business start हो चुके हैं. As a Amazon की बात ले लो, as a freelancing की बात ले लो. But what you advise to the youth कि should they have to go for the digital side? लाइक आपको एक फ्रीलांसिंग में बच्चा कोर्स करता है 6 महीने का, ठीक है. एक वही बच्चा, दूसरा बच्चा ग्रेजुएट होता है, 4 साल की डिग्री लेता है, इनफैक्ट 2 साल का मास्टर्स भी करता है, 6 साल उसने डिग्री में लगाया है, बट वो फिर भी इतनी अमाउंट जनरेट नहीं कर पा रहा जितना वो पैसा बना रहा है. तो शुड यूथ
को उस तरफ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, लाइक डिजिटल बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, या ट्रेडिशनल उसको फॉलो करना चाहिए बिजनेस को? ये बहुत ही आपका वैलिड सवाल है और ये आजकल का मेजर एक इशू है। आपने बोला कि 6 महीने की कोर्स एग्जैक्टली। यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, राइट? या ठीक है। सो आई थिंक यू नीड टू सेग्रीगेट दो अलग चीजें। एजुकेशन हासिल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट हासिल, एजुकेशन के बहुत से फायदे हैं। अगर आप किसी को देखोगे तो इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन तक का जाना पड़े तो आप चीन तक जा सकते हैं। तो लेट्स नॉट कंबाइन द टू थिंग्स। आपको क्या चीज रोक रही है कि आप सही से वो कोर्स करके जो है उसमें ऑफलाइन में डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते? लेट दैट बी एन एडिशनल इनकम फॉर यू, कि जो आप जब तक आपकी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उससे आप थोड़ा अपने लिए इनकम जनरेट करते हैं। आप wherever you can do that, तो अपने लिए साइड इनकम जनरेट करते रहे तो ऑटोमेटिकली आपके घर के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, आपकी फैमिली पे आप प्रेशर नहीं डालेंगे, आप ये अगली चीज नहीं आ जाएगी। ये आपको मतलब इसका टाइम नहीं मिलेगा। जिस दौर में हम आज रह रहे हैं, ट्रेंड्स एंड ये एक जमाना था फेसबुक आया, ठीक है, आज कौन फेसबुक को पूछता है? जो आ गया वो इंस्टाग्राम पे चला गया, फिर इंस्टा के बाद वो यंगस्टर्स के लिए स्नैपचैट आ गया। ये दिस विल कीप इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, रिक्वायरमेंट्स विल कीप इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। एजुकेशन इज दैट ग्राउंड जो आपको इस हर चेंजिंग दौर में खड़े होने का फाउंडेशन देता है। आई एम नॉट फ्रॉम द वो मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, ठीक है, बट इट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। हैविंग अवेयरनेस एंड दिस, इसीलिए एक कहावत है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मैं बैठ के अपने बच्चों से सीख रहा होता हूं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू शो मी कि अब क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। सो जिस वक्त अगर आपको कोई एक स्किल मिल रहा है, अब वो जो आपने अमेजोन की बात की, अमेजोन क्या करता है सिवाय इसके कि एक ऑनलाइन साइट है जिसकी दुकान है ऑनलाइन पे ब्रिक एंड मॉर्टर की जगह, यानी कि जो है वो ईंट की दुकान नहीं है और कंप्यूटर की दुकान है, इसके अलावा और क्या करता है अमेजोन? नथिंग। सो दैट्स व्हाट आई सेड इन माय टॉक। एसेंशियली बिजनेस वही है, वो एक रिटेलर है और कुछ नहीं है, सिर्फ उसने तरीका चेंज कर दिया आज के माहौल और ये भी एक बहुत लंबी डिबेट है और दिस इज अ वेरी बिग थियरी एंड ऑल कि ये तरीका भी चेंज, अगर कोविड नहीं आया होता तो जितना तेजी से हुआ नहीं हुआ। एक चाइनीज जिसने एआई में डेवलपमेंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसने ये कहा कि जी मैं 15 साल में समझता था कि एआई यहां तक का पहुंचेगा, मगर मुझे ये नहीं पता था कि जब कोविड आएगा तो वो ट्रेजेक्ट्री जो मैंने 15 साल की थी, मुझे नहीं पता था कि ये 10 साल तक का कुछ नहीं होगा और 5 साल में अचानक हो जाए। सो यू कैन डू बोथ थिंग्स, विच मीन्स के जो ग्रेजुएट बंदा है उसके अंदर लैक ऑफ पोटेंशियल है कि वो साइड पे हासिल नहीं कर रहा। तो करें क्यों नहीं करें भाई? जब मैं अपनी, अब मैं वही कह रहा हूं, आपके खोजा खून है अगर, तो वो आपको धंधा करने का बचपन से, मुझे आज भी याद है क्लास 7 में मुझे नई नई गेम्स का शौक था। अब घर का सिस्टम ये था कि महीने का पॉकेट मनी बंधी हुई थी कि यही है, इसी में जो लेना है गेम ले लो। अब चाहिए गेम, क्या करूं? तो क्या किया, एक दोस्त के पास कंप्यूटर था, उससे बोला कि हम मिलके ना एक बिजनेस शुरू करते हैं। उसने कहा क्या करेंगे? मैंने कहा हम एक काम करते हैं, नई गेम खरीद के आएंगे मार्केट से और जो है वो अपने पास वो फ्लॉपी दौर, पता नहीं आप समझोगे किस दौर से हूं, बट इसीलिए मैं आपको इसीलिए यूथ में नहीं बुला रहा था। हाँ, ये हाँ, फ्लॉपी अकाउंट्स नहीं है, फ्लॉपी डिस्क होती थी। फ्लॉपी डिस्क को जो है हम लोग कॉपी करते थे, स्कूल जाते थे, 25 रुपए की कॉपी गेम बेचते थे। अब 4 गेम बेच ली, 25-25 रुपए में 100 रुपए की नई एक और गेम आ जाती थी।
figure out a ये way. आप पायरेटेड काम ना सिखाएं हमें, हम ये खोजा जमात में बैठे हुए भाई, ये हलाल सारे काम होते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ना आप उस यूथ वक्त हैं, पाकिस्तान ना में आप- पायरेसी लॉज नहीं उस जमाने में लॉस नहीं थे, बाद में। अली अंकल आपको कुछ ऐड करना था इसमें? आप बैठ जाएं सर। Thank you, sir. Just wanted to add some success story in this field. So my brother's driver's son, he mashallah did well in school, Habib Public School. So then he did from Zabis. So while he was in there, he developed a liking to do work in a stock brokerage. तो वी हैपन टू नो समबडी, तो हमने उसको लगा दिया। जाते जाते उनको इनका रिसर्च इतना पसंद आया कि उसको उन्होंने परमानेंट कर लिया, इवन बिफोर ही ग्रेजुएटेड स्टॉक ब्रोकर में एज अ रिसर्च एनालिस्ट, नॉट अ सेल्स. So while doing the research analyst, he is of course very well versed with the social media. He got himself some jobs from outside to do research work. अब उसने वो भी स्टॉक ब्रोकर भी छोड़ दिया, अब घर बैठे बैठे वो कमा रहा है. You know, he's earned so much that he sent his father only recently for ziyarat also. So there are such stories available, success stories, and mashallah, his next generation, you know, is going to be also well educated and with an entrepreneurial skill. इंशाल्लाह. ऐसे बहुत से cases हैं, lot of things to share. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, अस्सलाम वालेकुम. My Walaikum name salam. is Mohammed Sadiq and basically I am finance professional and I am managing a small startup. It's basically a solar business, and it's my question is basically a different way. I have been interacting with many our startups are basically lacking in this thing. So, as far as you were referring that we are thinking for the louder or the larger benefit of the community, why we are lacking? There are a lot of things I have heard from my friends. They are very passionate about doing the business, but the hurdle is the things economical, how they will manage their family, their economic issues. We already raised. The other thing, what I have seen in the women community, it's basically joining the hands or putting the hands. Basically, you are focusing on. What's the things we are lacking in? Because my fathers and or my elder father was basically doing in the traditional business segment, and we are mostly connected with the women communities. And I've seen the guys. हमारा खोजा बच्चा अगर धंधा करेगा तो शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो या वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है in the last many years, and why they are doing. What's the difference? Are you people looking at the community, जो women community इतनी excel कर रही है? Please. Bismillahirrahmanirrahim. An interesting question. During my tenure as a teacher at IBA, and my subjects, like Nakiba mentioned, were small business management and entrepreneurship. From course designer to course instructor. One of the researches we undertook at IBA was the community entrepreneurship profiles. So every community ticks in a different way. हर एक का काम करने का तरीका अलग है, माइंडसेट अलग है, ब्रॉटअप अलग है, कुछ हद तक कल्चर अलग है. तो बोहरी बाज़ार, बोहरी कम्युनिटी है, कहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं? हार्डवेयर में, क्रॉकरी में, एम्यूनिशन में, guns and ammunitions. Likewise, you have their females are mostly into teaching. तो हर का ये जो बंस रोड पे फूड स्ट्रीट है, कराची हलीम से लेकर कई किस्म के हलीम और रबड़ी और मिठाइयाँ, दिल्ली सौदा करान, दे डोमिनेट. ठीक है? तो एवरी कम्युनिटी क्लिक्स इन अ डिफरेंट वे. फैमिली बिजनेसेस में फ़ायदा ही होता है, या प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे थे, कि फैमिली सपोर्ट हासिल है. इन केस ऑफ फेलियर, इन केस इट डजंट क्लिक, फैमिली साथ खड़ी रहेगी.
एक और फ़ायदा है कि आपके भाई, आपके भतीजे वगैरह एज मैन पावर अवेलेबल है, ट्रस्टेड मैन पावर. So the Chiniotis are known to be high risk takers. They are first in, first out of businesses. कोई नई फील्ड आती है तो जो दिल्ली सौदागर का नाम लिया, इनकी खूबी ये है कि when they start a business and it's getting successful, वो अपना राज छुपाएंगे नहीं, खींच खींच के अपने रिश्तेदारों को लाएंगे कि बिजनेस स्टार्ट करो, यहाँ शुरू हो जाओ. Likewise, हर एक बोरीज आर कंजर्वेटिव, so they'll stick to the given fields. वो हाई रिस्क वाले नहीं है. अनफॉर्चुनेटली उस स्टडी ने बताया, जब ये प्रेजेंट की जाती है कि खोजा बिजनेसमैन है, ऑल्दो वी आर अ फेथ बेस्ड कम्युनिटी, ये अपने सगे भाई को भी बिजनेस ट्रेड नहीं बताते हैं. थैंक्स. सो द फॉल्ट लाइज नॉट इन द बिजनेस ट्रेड, इट लाइज इन द आइडियोलॉजी. हमारे अकीदे का मसला है. I really appreciated Asad Aga for dedicated a fund, but I just raised a question to the community organization which is lending and especially working on the business. They easily gives the loans for the businesses. I asked them here, I am doing a business. Can you channelize me 10 networkings or the men's from the community who are doing the same business which I am doing? So they don't have an answer. So they really said कि यार हम नहीं कर सकते हैं. So the problem or the things I am looking in the communities, basically वो अपने बंदों के हाथ पकड़ रहे हैं और they are basically experiencing और they are basically benefiting. उनके जो youth है वो उनके जो seniors के जो experiences हैं उनसे फायदा उठा रहे हैं. देखो सॉरी, तुम्हारी बात को बस यहीं पर एक्सटेंड करूंगा बिकॉज थोड़ा टाइम भी शॉर्ट है. देखो हमने थोड़ी देर पहले यही कहा जब हमने अपने पॉइंट्स नोट डाउन किए थे ना, फॉर हेल्पिंग द कम्युनिटी. देखो फंडिंग तो एक उसका एक हिस्सा है. द इम्पोर्टेंट इज हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग. एग्जैक्टली. सो द आइडिया इज, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, एज अ कम्युनिटी जो इंशाल्लाह ताला जमात इस पे 100% वर्क करेगी, along that we have the support, that it is not only about the funds, that's a small part of the entire game. It's actually about the mentorship, hand holding and also networking inshallah. That is the plan. देखो यार, honestly and I'll be very honest, candid, ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं ना, seminars वगैरह, ये इस thought process को promote करने के लिए. Look, this is the way we can change communities, by these thought processes. I'm hoping inshallah ताला कि आज इतने भी लोग आए, इसमें से कोई एक या दो लोग भी इस thought process को लेके चले गए और change कर दी, तो ना से वो अपनी जिंदगी change करेंगे, बहुतों की change करेंगे. So it is not only about financial aid which is seen as help. These kind of seminars are also very very important. हमारा objective ही यही है, especially youth के लिए. But anyways, I will wrap it up now because time भी हो गया है. Thank you very much Amir, Hussain, Ali uncle. It's been a pleasure talking to you. और आमिर, अब इतनी तुमको मैंने मुश्किल सवाल पूछे कि अब एक आध दो मशीन तो मैं ले ही लूंगा तुमसे, मेरा ख्याल. But नहीं, I think it's been a pleasure. हाँ, तो फायदा हो गया ना, तुम्हारा आने का फायदा हो गया. एक पानी मिला, चाय मिला, पानी मिला, चाय, नेटवर्किंग, धंधा भी हो गया. देखो भरोसे पे चल रहा है. इसीलिए मैं मना करता इसको नहीं बुलाओ. अस्कर तुम जबरदस्ती बोल रहे थे, अब देखो मैं फंस गया एंड में. Anyways, thank you very much everybody. It's been a pleasure. I think it was great to have this conversation. I hope that आप लोगों को भी कुछ ना कुछ benefit मिला होगा इंशाल्लाह. And let's just work together. मैं एक आखिरी बात करूंगा and then I will hand over to Zain. आ जाओ, बस मुझे एक लास्ट बात है. देखिए सारी हमने बातें कर ली. एक हम पॉइंट जो नहीं हमने इसमें ब्रिंग इन किया, वो हम कहते हैं लक, जिसकी हम बात करते हैं लक फैक्टर, कि जी वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन वो किस्मत नहीं थी. यार किस्मत जो होती है ना, वो ऑनेस्टली हम खुद ही बनाते हैं. ठीक है, किस्मत प्लेट में नहीं आती. किस्मत हम खुद ही बनाते हैं थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन, ये तमाम चीजों से. और सबसे इंपॉर्टेंट जो अबुल भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, फेथ. आई थिंक अभी मैं बात करने वाला, शायद लोग मेरी बुराई भी करें. लोग, आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव शियत, लाइक उससे आई एम 100% सोल्ड ऑन दिस. अनफॉर्चुनेटली हैविंग द बेस्ट स्कूल ऑफ द आइमा, वी स्ट्रगल एज अ कम्युनिटी इन आर फेथ. हम उसमें डरते हैं, घबराते हैं. आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है. जो हम लक की बात करते हैं ना, कि यार क्या होगा, वो लक नहीं, वो हमारे पास तो एक पूरी यूनिवर्सिटी बैठी है पीछे. Let's just step out. जो ऑलरेडी बिजनेस यहाँ कर रहे हैं या जिनके पास आइडियाज है, let's just get together as a community and have faith in each other, have faith in Allah, and वो लक जो हम वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा.
You know, as a community 100% मैं इसमें सोल्ड हूँ, 100%, 50, 90, 80% नहीं. सो जो हम लक की बात करते हैं ना, लक हम खुद ही बनाते हैं अपना, और वो लक का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फेथ. अल्लाह पे आप फेथ रखो. जो यूनिवर्सिटी हमारे पास है, हमारे आइम्मा की, उसको हम फॉलो करें, वी कैन नॉट गो रॉन्ग. आई गारंटी, मैं पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे लिख के सब कुछ कर सकता हूं कि अगर हम ये दो काम करेंगे, वी कैन नॉट गो रॉन्ग 100% इंशाल्लाह. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. And before conclusion, I would like to please आप सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं so we can conclude this program with the दुआ इमाम ज़माना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साते व फी कुल्ले सा वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.